हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक जी सचदेव एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मिकी सचदेव। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना ही भूलिए तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स? नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? तो दीज आर एक्चुअली द फोर्सेस ऑफ नेचर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन है, इन पर काबू पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो हम खुद तबाह हो जाएंगे। So these disasters are uncontrollable forces of nature which cannot be controlled at all. So all because they are much more powerful than us, and there are many ways. There are only two factions of them: natural hazards and natural disasters. Natural hazards are natural incidents which happen naturally, such as earthquake, जो हमारे भूकंप होते हैं नॉर्मल, जिसमें जमीन हिलती है पूरी. The earthquakes, sinkholes, tsunamis, typhoons. These are actually hazards and disasters. Disaster यानी एक तरीके की कोई बहुत बड़ी घटना होती है जो like droughts. Drought is one of the disasters. Volcanic eruptions, tsunamis, underwater volcanic eruptions, which causes high tides and low tides pressures. So guys, today I'll discuss about three natural disasters. आज मैं तीन टॉप थ्री के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करूंगा, एंड I'll talk about one of the cures, one of the managements of one of the disasters. So first is about the earthquake. Now, what is an earthquake? An earthquake is actually caused by a movement of the tectonic plates under the Earth's surface. ये अर्थ की सरफेस के ऊपर नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनके मूवमेंट से कॉज होता है। जैसे जैसे कोई टेक्टोनिक प्लेट ऐसे हिलती है, उसी तरह से ज़मीन के जैसे इरोजन ये सब होता है। बट इफ इट हैपन्स इन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर वे, इट कॉजेज एन अर्थक्वेक फ्रॉम विच बिल्डिंग्स collapse. Okay, the buildings collapse, and it causes a lot of destruction, leaving many casualties and many people homeless and injured. One of the main earthquake example comes from Gujarat. The first one happened in 1737 year. सन 1737 में हुआ था ये सबसे बड़ा earthquake. So it was a big trouble. Many casualties occurred, and the second largest one happened in the year 2001. And it was a big thing because it caused 50,000 people to be killed in the accident, and many people were homeless, affecting 21 districts in Gujarat. The second one which we are going to discuss about is flood, यानी बाढ़ जो होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. Now, what is flood? Flood is actually the overflow of any water body which can cause a lot of overwhelming of water in a particular region. मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पानी जो होगा वो किसी नदी या किसी भी पानी जल शरीर यानी वाटर बॉडी से ओवरफ्लो हो जाएगा। वो ओवरफ्लो होते ही वो दूसरी जगह फैलने लगता है, सो इट कॉजेज फ्लड्स. And these floods have a very bad impact on environment because it has many diseases which are being carried with it from the water, like pneumonia is one of the common ones, malaria, चिकनगुनिया, डेंगू, ऑल्सो डेंगू, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरी जैसे काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं, जो होमलेस, मेरी उधर लूज देयर लाइव्स फ्रॉम ड्राउनिंग. इट विल ऑल्सो कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट. इट किल्स द एनिमल्स विच आर अराउंड इट. इट मेनली हैपेंस इन द ईस्ट, जहाँ पे जानवर बाढ़ से मारे जाते हैं जंगलों में. So that's another story, because floods are one of the great problems in India and some parts of Africa. Because we cannot stop them from the overflow. A lot of rain causes a lot of floods. Gujarat, some parts of the like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, they are prone to a lot of high floods. The third natural disaster, the तीसरा natural disaster I'm going to talk about it, that is drought. Drought is one of the common ones. Now, what is a drought? Scarcity of rainfall, deforestation, and a lot of pollution, which causes a lack of minerals in the soil, causes a drought. मेरे कहने का मतलब इन हिंदी, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट, कि जैसे अगर आप किसी जहाँ किसी जगह पे कोई जंगल नहीं है, पूरे वहाँ के पेड़ काट डाले आपने, वहाँ पे नीचे खनिज की कमी है, खनिज यानी मिनरल्स जो होते हैं ज़मीन में उसकी कमी है, या काफ़ी ज़्यादा वक्त से वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पे अकाल पड़ता है.
यानी वो सूखा हो जाता है, दैट्स अ ड्राउट. So it has a big impact for the agriculture. It has one of the worst impacts from agriculture because it has crop failure is one of the main outcomes. क्रॉप फेलियर यानी इसमें किसान जो होते हैं, कृषि अपनी खेती जितने भी उन्होंने चीज़ें फसल उगाई वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अगर बारिश ना हो उगी हुई फसल बर्बाद हो जाएगी या तो फसल उगेगी नहीं. एंड दैट इज अ बिग कॉज ऑफ सुसाइड फॉर फार्मर्स. फार्मर्स कॉज कमिट सुसाइड फ्रॉम दैट, which has to be prevented in India. And as promised, at last, मैं आप लोगों को एक डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा. So one of the ones which I'm going to talk about is earthquake. मैं भूकंप के मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा. So there are prevention and cure for everything. So let's see what a prevention because it is better than cure. Mhm. So while preventing an earthquake, we have to carry all our mobile devices and food packages with us. And please, while you are in an earthquake prone site, never ever use the lift. If there's an apartment which has an elevator, do not use the lift. आपको lift use नहीं करनी है because it causes a huge impact. अगर basically lift भी collapse हो सकती है बहुत बड़ी speed से, which can be a lot more fatal and lethal for the person who's traveling in that. And never use the corners of the stairs or the walls. Always remember that if you get an injury from an earthquake, it can never heal. वो कभी heal नहीं होती. So while preventing an earthquake, be careful. Always carry food packages as backup, your devices, yourself, and be be away from a large crowd or the large buildings which are going to collapse. तो इससे आप earthquake से बच जाएंगे and आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा. And you'll be safe at every single cost of life. दोस्तों आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा. प्लीज़ मेरे चैनल बेकी संजय को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. एंड अगर आपको इस चीज़ में और मज़ा आया तो मैं आपको अगली वीडियो के लिए अपडेट करूँगा. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.